फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ लिंकोसोमाइड्स। सो इसमें भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। फर्स्ट इज द लिंकोमाइसिन। फर्स्ट one is the lincomycin. It is obtained from Streptomyces lincolensis. It is obtained from Streptomyces lincolensis. Lincolensis. So lincomycin. It is a bacteriostatic antibiotic and it acts by interfering with the protein synthesis. Have cross resistance to मैक्रोलाइड। अगर मैक्रोलाइड को रेजिस्टेंस है उसका मतलब लिंकोमाइसिन को भी रेजिस्टेंस है। क्रॉस रेजिस्टेंस। ओके, क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस मतलब क्या कि एक एंटीबायोटिक को अगर आप रेजिस्टेंट हो, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, सो जैसे आपको होता है इफ यू आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन दैट मींस यू आर आल्सो रेजिस्टेंट टू सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है, ऐसा दैट इज अ क्रॉस रेजिस्टेंस। एक एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो दूसरे एंटीबायोटिक को अगर रेजिस्टेंस दिखाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। सो लिंकोमाइसिन आर क्रॉस रेजिस्टेंट विद द मैक्रोलाइड्स। मतलब ये बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू मैक्रोलाइड, so it will show cross resistance to lincomycin. So lincomycin is obtained from Streptomyces lincolensis. It is a bacteriostatic antibiotic act by interfering with the protein synthesis. इसका adverse reaction क्या है? So it depletes the neuromuscular transmission, may cause pseudomembranous colitis, jaundice. In addition to this common reaction, other common adverse reaction of nausea, vomiting, over. Then it is used as an alternative to the penicillin or erythromycin. It is used in the chronic osteomyelitis because of the good penetration in the bones. ये ड्रग बोन में अच्छी तरह से जाता है तो जो बोन की इन्फेक्शन है ओस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, ये देते हैं ओरली। दूसरा उसका भाई है क्लिंडामाइसिन, तो ये ओरली नहीं देते, इसका यूज होता है लेडीज में ज्यादा। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने वल्गैरिस, जो आपके मुंह के छाले होते हैं, जो लेडीज के स्किन के ऊपर जो फोड़े आते हैं उसको बोलते हैं acne vulgaris. So in that case, clindamycin is used. So it is a 7-deoxylincomycin. Is a semisynthetic derivative of lincomycin. It is a bacteriostatic at low concentration, bactericidal at higher concentration. Similar to lincomycin, it is used in the reflex infection of aerobic bacteria, along with aminoglycoside used in the treatment of peritonitis. Then acne vulgaris. Acne vulgaris भी याद रखो। acne मतलब जो स्किन के ऊपर, फेस की स्किन के ऊपर जो बड़े बड़े ये होते हैं उसको बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। सो क्लिंडामाइसिन इज यूज्ड। और सुपर इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रिडियम डिफेकली इट कैन ऑकर। इफ ऑकर, ड्रग शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड ट्रीटेड विद द मेट्रोनिडाजोल। मतलब अगर क्लिंडामाइसिन का ट्रीटमेंट हो गया आपको सिस्टमिक, तो उसमें आपको एक क्लोस्ट्रिडियम डिफेकली एक ऑर्गेनिज्म होता है, इट कॉजेज द डायरिया, तो इसका सुपर इन्फेक्शन होता है। सो इफ सुपर इन्फेक्शन इज देयर, you have to stop the drug, take metronidazole treatment of that Clostridium difficile. Now next one is vancomycin. It is obtained from Streptomyces orientalis. इसका सोर्स याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है vancomycin। vancomycin के ऊपर क्वेश्चन, what is the source? Streptomyces orientalis. vancomycin सोर्स याद रखो, Streptomyces orientalis. It is a bactericidal drug and it also acts by inhibiting the cell wall synthesis. तो देखो अभी तक प्रोटीन सिंथेसिस वाले इनहिबिटिंग वाले ड्रग्स थे, अभी ये क्या करेगा, सेल वॉल को, लाइक पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन। सो ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, इट इज अ बैक्टीरिसाइडल ड्रग, इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। इट बाइंड्स टू ए टर्मिनल डाइपेप्टाइड नोन एज अ डी अला सीक्वेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान का जब फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का, so in that you have one protein known as dipeptide, by dipeptide having D-alanine sequence, D-alanine sequence उसको बाइंड करेगा and prevents the release from the bacterioprenoid lipid, prevent the release, and also prevent the cross linking of this peptidoglycan, damages the cell wall. Adverse reaction क्या है? So question already आ चुका है। Redman syndrome is the adverse reaction of vancomycin. So ये होता क्या है? So local thrombophlebitis, जहाँ पे इंजेक्ट किया है वहाँ पे thrombophlebitis हो जाएगा, generalized reaction like edema and redness, and that's why vancomycin लेते हैं तो उसमें एक रिएक्शन मिलता है आपको, पूरे बॉडी आपका रेड होती है, पूरी बॉडी आपका, बॉडी में आपका जनरलाइज्ड रिएक्शंस, टिश्यू रिएक्शंस होते हैं, स्किन रिएक्शन हो गए, सो उसमें सब आपका पूरा बॉडी रेड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई रेडमैन सिंड्रोम। सो vancomycin adverse effect is nothing but the रेडमैन सिंड्रोम। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। vancomycin is a mechanism भी याद रखो, it causes the inhibition of cell wall synthesis, not a protein. It binds with the dipeptide D-ala.
D-alanine sequence of peptidoglycan. After binding, it prevents the release of newly synthesized peptidoglycan as well as prevent the cross-linking of peptidoglycan. And Redman syndrome is adverse effect and also causes auditory damage. Now it is used in the staphylococcal endocarditis. Staphylococcus infection का अगर heart में तो endocarditis. Pseudomembranous colitis because of the biotoxin of Clostridium difficile. Vancomycin may be used in the penicillin and cephalosporin resistance bacteria. Then uska next one is tiacoplanin. Tiacoplanin produced by actinoplanes tiacomyceticus. Similar to vancomycin in all aspects. It is newer glycopeptide antibiotic mixture of 6 similar compounds. तो ये glycopeptide है. Glycopeptide antibiotic vancomycin and tiacoplanin. The next one is the sodium fusidate or fusidic acid. सोडियम फ्यूसिडेट और फ्यूसिडिक एसिड क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है जिससे आपको पूछेंगे फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इज अ स्टेरॉइडल इन नेचर तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है याद रखो सोडियम फ्यूसिडेट और फ्यूसिडिक एसिड सोडियम फ्यूसिडेट और फ्यूसिडिक एसिड इज नथिंग बट द स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक so it is a steroidal antibiotic obtained from sodium salt of fusidic acid is obtained from parasitic fungus known as a Fusidium cocainium. Fusidium cocainium. So ये सोर्स बताया था उसका Fusidium cocainium. That is a steroidal antibiotic. So it has a steroid in the structure and that's why known as steroidal antibiotic. So it is a bactericidal antibiotic. Mechanism acts synergistically with the penicillin and macrolide. Adverse drug reaction है epigastric pain, hepatic dysfunction may aggravate the peptic ulcer, may cause the peptic ulcer and exerts catabolic effect. Common plus adverse reaction. Common मतलब nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain. Now it is used in the treatment of staphylococcal infection. Mostly it is used locally. ये locally use करते हैं skin के infection के लिए. Sodium fusidate और fusidic acid. It is a steroidal antibiotic. Question आ चुका है. Next one is the bacitracin. Bacitracin is a polypeptide antibiotic. Bacitracin क्या है? Polypeptide antibiotic. तो इसको भी याद रखो polypeptide antibiotic कौन है? Lincosamide कौन है? उसके बाद में steroidal alkaloid कौन है? So bacitracin is a polypeptide antibiotic obtained from Bacillus subtilis. Bacitracin में तो easy आपको समझ में आएगा सोर्स क्या है? Baci मतलब Bacillus subtilis. Bacillus subtilis obtained from Bacillus subtilis. Similar to penicillin in the spectrum of activity. It acts by inhibiting the cell wall synthesis earlier step than penicillin. Penicillin क्या करता है कि डायपेप्टिडिल ट्रांसफरेज को पेप्टिडिल ट्रांसफरेज को बाइंड करता है पेनिसिलिन एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ दैट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विल बी प्रिवेंटेड. तो उसके पहले एक स्टेप आता है वो स्टेप bacitracin inhibiting. So acts by inhibiting the cell wall synthesis at a step earlier than penicillin. एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस अनयूरिया मतलब absence of urine टॉपिकल एलर्जिक रिएक्शन used to treat topically as well as used to treat topically as an antiseptic bacitracin. Next one is a linezolid. Linezolid is a oxazolidine dione. So linezolid is oxazolidine dione bacteriostatic against the staphylococcus and enterococci, bactericidal against the streptococci. It is also effective against the methicillin resistant staphylococcus aureus and bacteria which are resistant to vancomycin. Mechanism देखो it acts on a 23 years fraction of the 50 years ribosome and interfere with the formation of ternary complex. Ternary complex जो होता है पहला स्टेप जो होता है प्रोटीन formation of 43 years ribosome 43 years pre-initiation complex we have seen that 43 years pre-initiation complex में होता है mammalian cell में होता है bacterial cell में होता है 23 years pre-initiation complex because bacterial ribosome is 70 years human ribosome is 8 years it acts on a 23 years fraction of 50 years ribosome and interfere with the ternary okay interfere with the formation of ternary complex N formyl methionine tRNA70 complex linezolid distorts the RNA binding site overlapping both 30 as well as 50 ribosome and stop the protein synthesis which give protein synthesis initiation. Basically it stops the initiation of protein synthesis. याद रखो it will bind to ternary complex. ज़्यादा कुछ याद मत रखो. It acts by preventing the formation of
70 is ribosomal complex which initiate the protein synthesis. Because of unique binding site, there is no resistance to this drug. Bacteria क्या है? It has a unique binding site and unique mechanism of action. That's why bacteria will not develop resistance to linazolid. So again, it act on a 23S fraction of 50S ribosomal subunit interfere with the formation of ternary complex. That is the first step. That is the initiation of protein synthesis. That is blocked up by this linazolid. Linazolid is oxazolidine dione. Now adverse reaction क्या है? याद रखो इसको. Because of unique binding site, it will have no resistance. Common adverse reaction जो है वो तो है उसके plus rarely it cause sometimes it cause can cause bone marrow suppression leukopenia. It is also a MAO inhibitor. MAO means monoamino oxidase inhibitor. It is an expensive drug and should be reserved for the treatment of documented serious vancomycin resistance infection, vancomycin resistant staphylococcus infection. That is a vancomycin resistant enterococcus and staphylococcus aureus infection. Vancomycin resistance enterococcus and vancomycin resistant staphylococcus aureus infection respectively. ये लास्ट में यूज करते हैं जब कोई भी ऑप्शन नहीं तो वो इसमें यूज करें. So it is not used first. This is the only antibiotic to which bacteria has not developed the resistance till today's date. तो इसको resistance नहीं मिला है अभी तक. So that's why it is used in the final step, linazolid. Okay, it is used in the complicated soft tissue infection, septicemia and nosocomial pneumonia. Lincomycin का structure देखो आप, lincomycin, clindamycin. This structure of lincomycin and clindamycin में सिर्फ क्लोरीन रहेगा, clindamycin में क्लोरीन रहेगा. यहाँ पे जो कार्बन नंबर 7 है, यहाँ पे क्लोरीन अगर आ गया तो that is will become clindamycin. It is a structure of chloramphenicol. तो क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रो डेरिवेटिव. नाइट्रो डेरिवेटिव में कौन आता है? क्लोराम्फेनिकॉल. दिस इज डाइक्लोरोएस्टामाइड ग्रुप. देन दिस पैरानाइट्रोफेनाइल ग्रुप. दिस स्केलेटन इज नथिंग बट द प्रोपेनॉल. प्रोपेन 2 ऑल A1 2 3 प्रोपेनॉल. डायस्टामाइड फिनाइल नाइट्रो ग्रुप एंड प्रोपेनॉल. तो इसका सार देख लेते हैं शॉर्ट में. लिंकोमाइसिन्स दे आर ऑफ्टन फॉर्म एक्टिनोमाइसिट्स, then Spectomyces and Lincomyces. These are the three organisms. They are used in the penicillins resistant to Esaurus. तो penicillin resistance Esaurus infection में use करेंगे. Substitution on pyrrolidine at a C5. तो ये देखो इसमें ये जो है this is pyrrolidine function. Okay, ये हो गया 5. Substitution on pyrrolidine at a C5 affect the activity in the following manner. Demethylation, N nitrogen demethylation increases the activity against the gram-negative bacteria. Increase in the carbon chain of propyl substitution at C4 in pyrrolidine up to N-hexyl increases the activity in vivo. Lincomycin याद रखो ये pyrrolidine स्ट्रक्चर है. N-methyl जो ग्रुप है ये N-methyl के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है. Lincomycin इसमें clindamycin भी आता है, उसका सार है. कार्बन नंबर ये जो है N demethylation increases the activity against the gram-negative bacteria. अगर वो मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के ऊपर रिमूव किया तो एक्टिविटी इंक्रीज होता है. Increasing the carbon chain of propyl substituent at C4 in pyrrolidine up to N-hexyl increases the in vivo. ठीक है, मतलब ये जो है ये साइड चेन it can be increased up to hexyl. So ये propyl अभी यहाँ तक hexyl से कर सकते हैं. So increasing the this carbon chain up to hexyl will increase the activity. Thiomethyl ether of alpha thiolincosomide is important for activity. Thiomethyl ether of alpha lincosomide. कहाँ पे है thiomethyl ether? Thiomethyl ether is important for activity. Then introduction of 7-chloro or 7-methoxy changes the partition coefficient of compound and alters the activity. तो जो क्लोरो है 7 एस कॉन्फ़िगरेशन का क्लोरो डालना है या मिथॉक्सी ग्रुप डालना है आर कॉन्फ़िगरेशन का. नाउ क्लोराम्फेनिकॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली. सो इट इज आल्सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. इट बाइंड्स टू ए 50s ribosomal subunit and inhibit the protein synthesis.
It does not affect the human cell. It does not affect the mammalian cell, but in the mitochondrial protein synthesis is also affected by. It will not affect the mammalian cell normally in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस या साइटोसोल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो अफेक्टेड इन केस ऑफ mammalian cell, so that's why it has adverse reactions. ये क्या करता है, by binding to a 50s ribosome it will prevent the protein synthesis, so it selectively bind to a बैक्टीरियल 50s राइबोसोम, वहां पे क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा. मैमलियंस को नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता, बट मैमलियन के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अगर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, इट आल्सो अफेक्ट द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मैमलियन सेल. तो दिस इज क्लोराम्फेनिकोल, इसका एक सार है शॉर्ट में. सो मॉडिफिकेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनाइल ग्रुप, replacement of nitro by other groups will decrease the activity. Nitro from para, shifting of nitro from para to other positions will also decrease the activity. Replacement of phenyl group by alicyclic moieties also results in the decrease in the potency. ठीक है, तो जो दिखा है वहाँ पे है. So this chloramphenicol, ये जो है replacement of this nitro group with other group decreases the activity, and shifting of this para nitro to the either ortho or this meta, they will decrease activity against. Replacement of whole para nitrophenyl group by alicyclic moiety will also decrease the activity. Then modification of dichloroacetamide side chain. So other dichloro derivative in the side chain gives potent compound. Third modification of 1,3 propanediol. So modification of C1 hydroxyl group result in the decrease in the activity which is essential for. यहाँ पे देखो, there are 3 SAR points in the chloramphenicol. chloramphenicol का SAR में 3 पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या है, ये वाला पार्ट. सो substituent on this para nitrophenyl. Okay, so replacement of this nitro group by any other group decreases the activity. Shifting of this nitro group to this position or this position will also decrease the activity. Okay, or replacement of this whole para nitrophenyl group by alicyclic substituent will also decrease the activity. Then second point is this dichloroacetamide group. So other analogs of this dichloroacetamide group is then third point is nothing but the ये वाला part. Third substitution on propane 1 to propanediol. Okay, so propanediol में इधर भी ज़्यादा कुछ changes नहीं कर सकते. So that's how there is a structural activity relationship of your modification of C1 hydroxyl group result in the decrease in the activity which is essential for activity. ये जो hydroxyl group है आपका important है activity के लिए. So chloramphenicol. So only antibiotic containing nitro group containing antibiotic chloramphenicol. याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है. So this was today's